Hi guys, welcome to Glee Travelers. This is us, Varsha and Mayur, and we welcome you to last episode of Maldive series. Morning guys, this is our last day in Maldives in Dhiffushi. Habibi. The sun is really harsh here, so we are always out with an umbrella and because एक बार मुझे already sunstroke हो चुका है, so we do want to follow the trend and आज कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं. ऑलमोस्ट सब आइलैंड पे सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट आपको वाटर एक्टिविटीज़ की ऑप्शन देते हैं. आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है. एंड स्विमर्स एंड नॉन स्विमर्स दोनों के लिए ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ऑप्शन है. हम लोग सैंडबैंक टूर पे जा रहे हैं. एंड हाउ लॉन्ग वी विल स्टे देयर? 1.5 hours or 2 hours. Oh, that's too much because the sun is really. If you won't come, I will come. Okay, this is our first time कि हम लोग सैंडबैंक विजिट करने जा रहे हैं. एंड Maldives is anyways known for its sandbank, so yes, it's a must. सैंडबैंक इज एक्चुअली जब आपका पानी का लेवल नीचे हो जाता है और सैंड रेज हो जाती है और एक लैंड का छोटा फॉर्मेशन हो जाता है, so that formation is called sandbank. And sandbank is time dependent, like high tide, low tide के हिसाब से sandbank form होते हैं. After a 20-minute beautiful drive, here we are, and we are just in mid of the from nowhere. Like literally, there's nothing around. But just a beautiful sandbank. Exactly, that's what it is. And here is the link above for our complete Maldives series. A piece of land just to ourselves for 2 hours. आप यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं. There's a lot to do here. Or just relax on the sand and under the shade of sun umbrella, swim in the warm water or snorkel. This is an ideal location to learn to snorkel with the help of a guide. Look at this fucking water, man. This is so clear. इतना सुंदर समुंदर देख के ये जनाब पागल हो चुके हैं. सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है और वो भी इतना सुंदर. मैं अंदर जा रहा हूँ. क्या करना है? डॉल्फिन को पकड़ने. डॉल्फिन लेके जाएगी तुझे. So, मेरे हिसाब से अगर आप मालदीव्स आ रहे हैं तो आपको सैंडबैंक ज़रूर आना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच यू कांट मिस. के बाद 2 hours हमें कम लग रहे थे. And we definitely captured some good memories. One more thing guys, sandbank क्योंकि mostly afternoon में ही होते हैं तो you will definitely get tanned. So bring your sunscreen and your caps. रूम पे जाएंगे. हाँ, रूम पे जाएंगे, बात लेते हैं. And we are back after having our lunch and bath. It's already sunset hour. What are you up to now? Go and catch the shark. Shark. I want to catch a shark. Like that. No, we are going sunset kayaking. This is where we are going.
The sunset is there. It's a beautiful sunset. This is one of my wish lists to do kayaking during sunset. It is definitely a tiring activity. Freaking tired, but this is one beautiful experience. We are loving it. ऐसा लग रहा है आसमान को किसी ने कलर ग्रेड किया है, but this is the real sky. Definitely one of the best days spent in Maldives. एक दिन में 2 activities, good thing to do. And this sunset is kind of bidding us a farewell. I don't know about Mayur, but I still feel I need one more day. That's my usual. Yeah. And I think there is few more things we could have done, but हमारे पास अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों थोड़े बीमार हो गए थे, तो उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम चला गया. But we had fun. Yeah, we had fun. Good morning guys, beautiful morning in Dhiffushi. हमारी अर्ली मॉर्निंग एग्जिट है डिफूशी आइलैंड से क्योंकि अराउंड 12 बजे हमारी फ़्लाइट है. सो येस, लेट्स गेट गोइंग. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. दिस इज़ सो टेम्पटिंग टू स्टे बैक वन मोर डे, बट nah, it's not Goa, it's Maldives. We have to go back. To sum up, I would say Maldives is a paradise, the sunny side up. It is little costly here and there. You need to find the right places. Maldives के alternative option है लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड. बोथ आर चीपर देन दिस. एंड अगर आपकी Maldives की कोई भी क्वेरीज है, you can always ask her. We are happy to help. Hi guys. So we are just Arrived in Bombay in our place. Yes, it feels so good. Yes, it feels so good. Happy New Year, Mumbai. Happy New Year, Mumbai. We love Mumbai. Yeah. So I don't know. हम लोग की फ्लाइट्स 3-4 घंटा डिले हो गई थी. तो हम लोग मॉर्निंग 7 o'clock से निकले हैं और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं. 8:30 बज रहे. More than 12 hours for Maldives to Mumbai, which is hardly 2.5 hour flight. So for us, the COVID protocol what we followed was COVID test both time while going and coming back, and second thing is your vaccine certificate, second dose. That's And two things. the important thing is that air suvidha. Yeah, Air Suvidha form, that is actually the health declaration which you have to fill while you are coming back to India. And if you're going to Maldives, they also have a health declaration that also you need to fill. Yeah. And you also need to fill their health declaration while departing from there. Yeah, so every time that is the main thing they ask. Cool guys, it was fun in Maldives. प्लीज़ लेट अस नो आप लोग क्या देखना चाहते हैं. हमारे प्लान हैं कि हम लोग मुंबई एक्सप्लोर करें. मुंबई में ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जो आप देखना चाहते हैं, या ऐसा क्या है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है एंड यू वांट अस टू कवर. यू कैन ऑलवेज DM us ऑन आवर इंस्टा ID विच इज़ ग्ली ट्रैवलर्स, या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आप मुंबई में क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वी वुड लव टू एक्सप्लोर ऑन बिहाफ ऑफ यू अलॉन्ग विद यू. एंड स्टे वियर्ड एंड स्टे सेफ. Stay happy. Stay happy. Stay together. Yes, stay together. That is must. Because this COVID times have taught us this ki together we all are better. And follow the protocols, guys. Yes. Before we leave, we want to tell you whatever makes your soul happy. Do that. Bye.